یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کے کیا دنیا کے ساتھ انٹرسٹ ہیں. یہ کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا از another bogey. Just look at what is happening inside India. Look at the power that China wields. It's laughable to think that this country can be a counterweight except unto itself. But it is what it is. What I have just said, and I'll repeat again, there is clear shift in what the world thinks about India. I'm not taking any credit for ourselves. India is doing what it's doing inside India, and the world is seeing that. This EU Disinfo Lab report that you mentioned catalogs 15 years of a fake news network against Pakistan in 114 countries. Why didn't they reveal it before? When Pakistan started talking about these issues publicly, and this is a change that we have made. देखिए, मैं जब से ये बात कर रहा हूँ, फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, and this is a change from previous governments. This is not a political statement. We have nothing to hide. कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से मैं दुनिया के सामने बैठ के ये ना बताऊं कि मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ और पूरी रीजन के खिलाफ क्या कर रहा है. जो भी रीज़न था, पहले ये बात पाकिस्तान नहीं करता था. अब हम दो टोक अल्फाज में ये बात कर रहे हैं, एंड द वर्ल्ड इज रिस्पॉन्डिंग. येस, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग द वे दे शुड गिवन व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया. यही चीज़ अगर कहीं और हो रही होती तो अभी यहाँ पे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई होती. But I'm telling you, they cannot with a straight face respond to what we tell them. Remember, we put out a dossier in October 2020.